होस्ट राइट शेयर कर दे रही हूँ। आप वो उसको पीपीटी के लिए आपके पास मैम रिसीव हो गई है या मैं आपको फॉरवर्ड करूँ? पीपीटी मैंने लेट मी चेक वंस। पीपीटी भेजी हुई है मैंने मैम आपको। सर मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। हाँ जी भेजी हुई है। संदीप मैम तो आप अंकित पीपीटी शेयर आप कर दीजिएगा सर की। अंकित मैम मैंने आपको वो दे दिया है ठीक उसका। मुझे लगता है हमें 5 मिनट्स वेट कर लेना चाहिए क्योंकि लिंक चेंज हुआ है तो थोड़ा सा लोग टाइम लेंगे। आराम से टेक योर टाइम सर। सब लोग फिर ज्वाइन करें तभी शुरू करें। श्योर श्योर। Screen is visible. Yes, it is. It is. so Surbhi ma'am, Navneet sir. हाँ जी मैम। Ma'am, I think most of the people who were due to join, I think they have, and slowly I think more people will keep joining. So if you think, then I think we are good to go. We can begin. Ma'am, if we can wait for 1 or 2 minutes more. Sure, ma'am. Okay. Okay.
Hello, Ji Vatsala ma'am. Madam, sound lead. So you're audible? Yes, ma'am. My voice is clear. Yes, sir. Yes, sir. Actually, मेरे यहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहे आज. जी, शुरू कीजिए मैम. Okay, sir. Good afternoon to all the participants to yet another session of the 1 week FDP. We are मैम गेट बंद now करो. on day 5, and this is our third session for the day. And as promised earlier, during the inaugural session, Honorable Pro Vice Chancellor Sir has graced us again with his presence. I welcome you, sir, on the behalf of the entire organizing team of this FDP. I welcome you heartily and with all the grace. And I also request Nameet sir to welcome our revered resource person for this session. Please, sir. Thank you, Vatsala ma'am. First of all, I would like to extend my sincere thanks and welcome to our resource speaker, Professor Dr. S.D. Sharma sir, who is the Pro Vice Chancellor of IIMT University, and we would say the mentor, torchbearer for we people of young generation. Sir, thank you very much for enlightening us. My dear friends, as you were already there in the inaugural function, so you must have heard sir there also, and today he is in the capacity of a resource person. Dr. Vatsala has given me the responsibility of introducing sir and welcoming sir. So it is a difficult task to summarize the credentials of Professor Sharma within 5 minutes or 7 minutes, but I will try to do it. My dear friends, my dear participant friends, Professor Sharma is basically a professor of management science. Sir did PhD in long back 1991. And after that, sir joined the KN IT Sultanpur from 1981 to December 2003. 23 years sir had been there. And then later on joined as the executive director in Kamala Nehru Institute of Management and Technology, Sultanpur from 2001 to 2003. After that, sir joined as a principal of Jain Narayan PG College, Lucknow. It is a famous college, and you will be surprised to know that this college is having more than 22 acres of land in Lucknow and have so many alumni of Supreme Court judges, High Court judges, and scientists, professors, engineers, and so on. So it is a very reputed college, as we have in Meerut College in Meerut. It is beyond the reputation of that college. So sir had been the principal of that college from 2003 to 2020, means 16 years sir had been the continuous principal of that college, and I would say transformed that college from a college to an institution. Earlier in 2003, it was a college, but today it is an institution. And then after retirement, with our request, sir joined as a Pro Vice Chancellor at IIMT University. My dear friends, why I am saying that sir has transformed that college into an institution, reason, I have some reason behind this. I have some facts behind this. When sir joined the college in 2003, there was the corpus fund of 1.7 crore. The 1.7 crore rupees fund was given to sir in his principalship. It was a good amount, no doubt. In 2003, it was a good amount, but you will be surprised to know when the Sharma sir left that college or got retired in that college, the corpus fund was 40 crores. You can presume the voluminous efforts, continuous, untiring efforts of a principal who has brought the 1.7 crores to 40 crores as a corpus fund. And secondly, it was not like that the everything what was earned was saved. No. During sir period, the JNPG college
got a new building of 43 rooms. It was a new block. 43 rooms have some meaning. 43 rooms for management, yoga, and other faculties. Sir has a long, this was the administrative experience of Professor Sharma. Beside this, Sir has a long experience in academics as well as research. Academics as well as research. I think the light has gone today. Some problem is there, but my voice is clear, Vatsala ma'am. Yeah, it's voice is clear. Yeah. So, sir, as a, sometimes it happens that when we become administrator or academic administrator, we forget our academics. But it was not with sir. Sir has taken proper care of his academics also, and during his career, my dear friends, you will be surprised to know sir has guided more than 34 PhDs. And 6-7 PhDs are under pipeline. So in a total, sir is the mentor of more than 40 PhD students. Beside this, if we talk about the books, writing and publication, there is a long list. And if I start speaking this list, it will be a more than 1 hour job. So my dear friends, besides academics, administration, book writing, and this paper writing, Professor Sharma has a different orientation towards life. I was going through the research publications of Professor Sharma sir, and you will be surprised to know there are a number of different versatile nature of publications like Kalam's vision, whether it is a reality or myth. Sir has given a publication on it, on the Honorable Vice was the Rashtrapati of India, Professor Kalam. In some cases, Sir has written whether our management industries are going in a right direction or not, whether the small scale industries are going in a right direction. Sir has also published some data on yoga practices in corporate sectors. One research paper was this. Another research paper was on changing dimensions of informal economy. Then management education in new millennium. These are the titles of research publications of Professor Sharma sir. Innovation driven retailing industry. It has some meaning. And then market potential of tourism services in India. Means it is a versatile field. On one hand, sir is talking about yoga. Second, on another aspect, on medium scale industries. On another aspect, tourism services. And another paper on sustainability through environment consciousness. Means he is also having great concern with the environment also. Women Day is coming, my dear friends, after a few days. Sir has also written a paper on impact of women SGH in eradication of poverty in the rural areas of Uttarakhand. So he is also concerned with women empowerment. Then microfinance schemes, celebrity endorsement. So long list is there. Financial inclusion in banking sector, effect of demonetization. When demonetization occurs, so sir also published a paper on it. Then impact of microfinance and entrepreneurship development, study of effect of celebrity endorsement, and so on. So many long list is there. So friends, as I mentioned earlier that I can't summarize the achievements of 45 years of academic administration here, but in one sentence, I would like to say that, sir, कुछ लोग होते हैं जो युग होते हैं, युग पुरुष होते हैं. हमारे आज के जो स्पीकर हैं वो एक युग पुरुष हैं और एक पूरा युग उनमें समाया हुआ है. अभी 2 दिन पहले हम लोगों की जब उस दिन इनॉग्रेशन पर बात हो रही थी तो एक टॉपिक सर ने बोला, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया टू भारत. It was a lecture delivered by honorable resource person, and it was praised so much. If you can go through the internet or YouTube, you will find the liking on this lecture. So, sir, I myself find overwhelmed that I am
introducing you. And again, you are most welcome on this platform. Thank you, sir. Thank you very much for being with us. Dr. Vatsala, ma'am. Thank you so much, sir, for so beautifully you have encapsulated sir's journey, his academic journey. And I fully take the responsibility, fully take this blame that I had, requested you this difficult task, because of course his achievements knows no bounds, and it is so difficult. And in spite of all these achievements, the humble personality that sir is, I mean, it is a privilege, sir, to be working under your guidance and supervision. And without any further ado, I would now request you to kindly enlighten today's participants and deliver your lecture, sir. Please, sir. Thank you, Professor. I also request Surbhi ma'am to take all the controls of sir's presentation, because I had stopped it due to some technical reasons. Ma'am, if you Sure, could ma'am, sure. kindly- I'm there. Yes, ma'am. Thank you, Professor Navneet and Dr. Just give me Vatsala. few seconds. Yeah. ये फोन आपका है? PVC, sir, please carry on. Ma'am will share the slides in Okay, between. okay, no problem at all, sir. First of all, would like to congratulate the Vice Chancellor of the university to provide a chance to the Department of Life Sciences to organize the FDP on very wonderful topic, that is a reskilling of teachers as per NEP 2020. And further would like to congratulate the team of the Life Science Department, those who are organizing the show, and especially the three people, Dr. Navneet Sharma, Dr. Surabhi Singhal, and Dr. Vatsala Tomar. अभी बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि कोई मेरे बारे में पढ़ रहा है, तो मैंने सोचा क्या इस लायक हूं मैं? मुझे नहीं लगता कि I did my job as a teacher till 1981 to 2020, and I hope that I should remain always a teacher, not the academic administrator or else. और हम लोगों का साथ कैसे जुड़ता है, क्या होता है, अभी नवनीत जी ने कहा, तो मैं कुछ इसके बारे में एक 4 लाइन मैंने कभी कही थी, तो उसको उससे शुरू करता हूं कि कहते हैं बंधनों के कई रूप होते हैं। 7 फेरों का बंधन, जो बहुत सारी चीजें हम जो जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते। 7 फेरों का बंधन, जन्म जन्म का बंधन, जन्मों जन्मों का बंधन, और एक बंधन और भी होता है, वो होता है मन से मन का बंधन। शायद ये हमारा और आपका ये मन से मन का बंधन है, जो हम इस स्टेज पर आके, जो मुझे ये ईश्वर ने शायद सद्बुद्धि दी, या ईश्वर ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों से जोड़ पाया। एंड इन माय ओन स्टाइल वुड लाइक टू congratulate the Professor Navneet Sharma, Dr. Vatsala, and Dr. Surabhi for the organizing this show. Dr. Navneet, I would like to get the first alphabet of it, the N. N means the novelty, the navinita. Means to change according to the requirement and people who believe in innovation and reform. That is the Navneet. And that's why to change the academic scenario of the university, not only the university, but the entire education world, the Dr. Navneet has organized this show, this FDP on reskilling of the teachers, those who are engaged right now, to adapt the problem and prospects of NEP 2020. Surabhi Singhal, the assistant stimulus,
Once we got an opportunity to plan, and as the Dr. Navneet Sharma had planned to organize the show, the person is required to stimulate the pupil, to motivate the pupil to work on it, to come and join us and to learn so many things which are required to implement the policy, that is the new education policy 2020. And number third, Dr. Vatsala, and who is the anchor of this program, and we, I have taken only we of his of her name, the visionary, जिसको हम कहते हैं दूरदर्शी, to the person who is ready to assess the impact of the program or the impact of anything which is launched earlier, that kind, and also disseminate the impact to the public at large too. So that is the Vatsala, who really taking all pains to organize the show. And after getting the information from many of the researcher and the many of the speakers, then definitely he will pen down some of the things and will circulate to number of people. That's why she is Doordarshi, she is visionary. So with these words, would like to start my deliberation on the issue reskilling of teachers as per NEP 2020. But initially, when would like to change something, initially the pupil oppose it. जब भी हम कोई परिवर्तन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ही में से कुछ लोग कहते हैं ऐसा हम क्यों करें. They initially oppose because it may be threat to them, or it may be they assume that it may be the problematic for them, and without knowing the benefit or the object of that program, as the pupil are asking for the NEP 2020-22. But I think change is not always bad thing. मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको सबसे पहले क्यों किया जा रहा है ये चेंज, इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तब जाके करो. तो always create a problem just because of a change is not a good thing. So we should learn first कि why it is going to be, और जब हम ये जान लें तब उसके बारे में कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा रहता है. And one should, according to one should celebrate the change when it is so hard, so difficult to launch, to implement. अब देखिए, जो लोग सबसे पहले किसी भी चीज को इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं, उनके सामने ऑब्वियसली कुछ दिक्कतें आएगी. तो बट दे आर द फ्रंट लीडर, दोज हु आर एक्सेप्टिंग द चैलेंज ऑफ दैट. और उसके बाद, उस एक्सेप्टेंस के बाद फिर द पीपल विल कम एंड फॉलो देम. So therefore, the first person who will interact with this problem, that is the leader, and he or she should be the visionary of that particular program, and they must be appreciated. So, but every change need a practice and repeatedly practice. एक बार आपने कुछ कर लिया वो नहीं हो सकता. So you should repeatedly practice of it, and then the one thing more which is required, that is the adaptive behavior. यदि आप में ये नहीं है, उसको अडेप्ट करने की आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, व्यवहार ऐसा नहीं करते हैं, then you can't change anything. So first you should develop one skill, that is the skill to appreciate other, and number second, you should adapt the practice and you should adapt the behavior to learn so many new things. At the case of new education policy 2020, still today in 2023, people are confused that how should they implement on positive note. बड़ा मुश्किल सा काम है. हम लोग जब भी NAP के बारे में कुछ कहते हैं तो people criticize it because number of pains has to be taken to implement this show, the policy.
एक बार मुझे याद है प्रोफेसर कलाम साहब की बात कही, और देयर इज अ पेपर ऑफ माइन ऑन दैट आल्सो. ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने सेड वंस, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना जुगाड़ बेस्ड, तो उनको भी कहीं दिमाग में कुछ रहा होगा, कुछ सुना होगा, तो उसमें आया कि एडजस्टमेंट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. हम जो जुगाड़ कहते हैं वो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन बट अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ. हम समझें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है. और जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक जुगाड़ तो जुगाड़ है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी शुड नॉट always interested to adjust something, but we should implement the thing after understanding the things properly. Would like to start on education 2020. The education has two meaning. First meaning, it is in broadly accepted by number of people, कि education is a system through which a child acquire knowledge, experience, skill, and sound attitude to perform a job and for the livelihood also. क्योंकि हम क्या करते हैं पहले कि make them employable, उनको हम कार्य करने के लिए योग्य बनाए, so that he can earn his food. तो first objective of the education is कि one should acquire knowledge and skills through which he can earn his food. But the pupil said it is the very minor object of the education. But दूसरे लोगों का क्या कहना है, वो कहते हैं दो आई डोंट बिलीव इन सो, क्योंकि मेरे ख्याल से तो जब तक एक काम करने योग्य व्यक्ति को नहीं बना देंगे, बाकी हम आदर्श की बात करेंगे तो वो मुझे लगता है बेमानी है आज की तारीख में. फट, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा है. एंड द सेकंड, इट मेक्स एन इंडिविजुअल सिविलाइज्ड, रिफाइंड, कल्चर्ड एंड टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग. हम एक सभ्य व्यक्ति बनाना चाहते हैं, एक संस्कारी व्यक्ति बनाना चाहते हैं. लेकिन सभ्य और संस्कारी व्यक्ति तब बनेगा जब उसकी जेब में अपने पेट भरने के लिए पैसा होगा. तो बोथ द एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट of education. That is one, we should train him, we should input number of skills required to perform a job for his livelihood. And second thing, we should train him like a civilized person, those who can build the civilized society and they can contribute in the life of the country. तो ये दोनों एस्पेक्ट मेरे इसमें आते हैं. And once I gone through the some of the lines or the how the education is defined by the Mahatma Gandhi ji. तो वो कहते हैं कि it's a combination of 3H. बड़ा बढ़िया मुझे लगा पढ़ने के बाद कि combination of 3H, the hand, the head and the heart. तीन चीजों का उन्होंने कहा, it's a combination of three things, the hand, head and heart. और वो कहते हैं कि अगर इसको हम कंबाइन कर दें तो वी कैन सक्सीड टू हैव ए गुड सिटीजन एंड वी कैन डेवलप ए पर्सन एम्प्लॉयबल टू. दोनों चीजें पूरी कर सकते हैं. इफ द हेड इज ओके, इफ हार्ट इज ओके, देन हैंड विल वर्क डेफिनेटली. If heart is okay, then definitely we will not do anything which will hurt others. तो ये दोनों चीजें हैं एजुकेशन का पार्ट, कि education should have the employability skill and education should have the things through which we should use the words, we should use anything which will not hurt to others. ये चीजें ध्यान रखने की है. That's why I admire Mahatma Gandhi ji and his the definition given by him. There are number of objective on the basis of the education definition given by the number of people like Mahatma Gandhi and the Vivekanand ji. तो इस एजुकेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है. दैट इज, एजुकेशन टीचेस अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एथिकल एंड अनएथिकल, फेयर and evil. The first thing,
वी शुड लर्न कि क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या गलत है, क्या सही है। इसके बीच में जो अंतर कराती है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन. Education provides person hope that they will able to address the difficulties that humanity in certainly facing. ये एक इसका और एस्पेक्ट है कि we should always ready to challenge the difficulties. We should always ready to face the difficulties or the challenges too. If it not, then we cannot innovate or reform anything. हम सब जहाँ थे वहीं रह जाएंगे, वही चीज करने लगेंगे. But being a teacher, we must always ready to accept the challenges. And it's very rightly said by on day before or two, Professor NL Sharma, कि बच्चा तो एक दिन एग्जाम देता है एक साल में, या अगर मान लीजिए उसका सेमेस्टर सिस्टम है 2 बार एग्जामिनेशन देता है, लेकिन एक टीचर अपने बच्चों के सामने रोज एग्जाम देता है. एंड एक दिन में एक शिकागो की एक फैकल्टी से इंट्रोड्यूस हुआ, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ बच्चों के लिए जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो अलाउ है, दे कैन कम विद दैट सिस्टम एंड दे कैन पुट बिफोर अस. और उसके बाद यदि हमने कहीं से कर लिया है, वो कहीं से लिख लिया है, तो कहते हैं मैम दिस इज अवेलेबल ऑन दैट प्लेटफॉर्म. इट मीन्स थिंक अबाउट कि हम जो भी कुछ करते हैं, that is assessed and analyzed by student every day, and we are called the examinee of every day. हर दिन क्लास में हमारा इम्तिहान होता है. तो it means कि we should ready to take the challenges every day, whether it is in the class or otherwise. Employee empowers you to challenge everything that appears to be incorrect. But there are so many things I have noted down over there as objective of the education, and the education empower you to become a employable you too. But in nutshell, education aims to develop children into a good citizen. आपको अच्छा हम छोड़ देंगे. Citizen. किसी किंग आ रहा है ना, वो साउंड ऑन है. यहाँ साला कोई नहीं आता, ना हिंग ना भिंग. हिंग कौन है? उसमें दर्शन रावल आके चला गया. अक्षय जी, I request you to mute your mic. मुझे तो ही पता नहीं. Please, thank you. Kindly mute. Thank you. So education aims to develop children into a good citizen. Responsible citizen apply their learning and gain skills to they help themselves and others. They help to move the human race ahead in areas such as equality, justice, and harmony. This is one of the major object of the education ki we should input number of skill to a person, to the child, though he will become a good citizen, responsive one, and lastly he should be the he should love to the equality, justice and harmony. अगर ये नहीं होगा तब आज की जो स्थिति है पूरे समाज में जो फैली हुई है बहुत भयावह है. इसका सामना हमको भी करना हो सकता है और हम इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे कि एम ऑफ एजुकेशन आई हैव डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट सेगमेंट. दैट इज द एम्स ऑफ एजुकेशन. वन, द इंडिविजुअल एम, द सोशल एम and the vocational aim. Individual aims of education maybe the biologist view. One should keep himself or herself fit to perform a job always. हम योगा करते हैं, हम जब बीमार हो जाते हैं दवाइयाँ खाते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए कि हमें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है. That's why we should keep ourselves always fit to perform. और यदि हेल्थ वाइज अच्छे नहीं रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे. तो that's why we should believe in the basics required to update our health. और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं करें, because our health is responsible for our livelihood too. यदि हम कहीं पर काम कर रहे हैं और हम रोज बीमार रहने लगे, एब्सेंटीज्म हो गई,
तो क्या चीज होगी, एक तो हमको सैलरी नहीं मिलेगी और दूसरा उस जगह का काम रुक जाएगा होना. तो दैट्स व्हाई द बायोलॉजिस्ट वैल्यू or the view is very important in the life of an individual. Second, the naturalist view. इसको मैंने कहा है autonomous development of individual through which a person can perform independently and believe in self-governance and self-awareness. मैम नेक्स्ट वाली आप चलाएं, उसमें नेक्स्ट स्लाइड individual aims. Dr. Surbi. So, okay. यस सर. नेक्स्ट स्लाइड आप कर दीजिए. एम्स ऑफ एजुकेशन के बाद जो है इंडिविजुअल एम. या ठीक है. द बायोलॉजिस्ट व्यू had already explained. The naturalist view, autonomous development of individual. A person perform his or her duty always independently. It may be the person who has to work with the pupil and the person who may have some subordination also, but he has to perform his duty. For that, he should develop he should develop the awareness for the job, what to do, how to do, why to do, and he should develop the one thing, the self-governing. यानी कि कोई उसको देखे या ना देखे, but one should perform his duties and responsibility by own. That is the naturalistic view. The psychologist view to develop innate power of individual. कुछ चीजें हमको जन्मजात मिलती हैं. कोई जन्मजात गायक होता है, कोई जन्मजात उसके एक एथलीट हो सकता है, उसमें ये पॉसिबिलिटी हो. तो जिसमें ये चीजें होती हैं, so then we should learn. Being a teacher, we should learn, we should have the knowledge to recognize that, and we should develop that skills, though the individual may become the expert of it. तो इसके लिए ये जरूरी है. It is the responsibility of the person, those who are responsible for the upbringing of the child. It may be the teacher or maybe the parents too. And the spiritualistic view to lead individual to self-realization. Everybody has sufficient potential to perform, but one thing we have to learn from ourselves, that if I am performing well, it should be recognized by the others too. It should be followed by the others too. That spirit must come within. कोई कहेगा नहीं, बल्कि हमें ये चीजें आनी चाहिए कि अगर हमको कोई फॉलो करे तो अब कितना अच्छा लगेगा कि आई हैव, जैसे आप किसी उसमें देखते हैं इंटरनेट पे कि कितने लोग हमको फॉलो कर रहे हैं. तो दे आर फॉलोइंग जस्ट वन और two words or the one or two sentences of us. But if somebody follow the image of one personality, तो तब होता है सेल्फ रियलाइजेशन स्टेटस और द स्टेज. दैट शुड द पर्सन developed himself or herself with the help of the parents and the teachers, so that he may become the perfect man of that particular field and may be followed by a number of people. That is the stage of the self realization. The next slide is of the social aims of education. Next slide is social aim of education. Is to live together and respect to each other. एक बड़ा मुश्किल काम है आज के जमाने में. हम सब लोग ये देख रहे हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द सोसाइटी है, दैट इज सो डेंजरस एंड डिफिकल्ट. कहते तो हमें गॉड इज वन, कहते हैं कि हर धर्म और ग्रंथ के अंतर्गत वो सब एक ही चीजें दी आई हैं, एंड वो सबको बनाती हैं कि वी शुड हैव द स्किल ऑफ टूगेदरनेस, एक साथ रहने की, सबके का सम्मान करने की.
तो समाज में सद्भावना का स्थापित वातावरण करने की और सभी धर्मों का आदर करने की बात सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं। और सभी कहते हैं कि चाहे ईद हो या होली, सभी को उसमें सहभागिता करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट कि वी सिट टुगेदर इन our drawing room and criticize others. And therefore, we are living with the two phases, one for the public at large and second one for myself also. So it means that we should have the one clear view in our mind that we should uh, uh, pray together, we should enjoy together, we should participate in uh, the uh, the celebrations of the Eid and the Holi too. सबको एक साथ मिलके. So we must concern that our act should not hurt others. किसी भी तरीके से हमारा कोई भी ऐसा एक्शन और रिएक्शन जिससे दूसरों को दुख पहुंचता है या किसी दूसरे रिलीजन को दुख पहुंचता है, तो सबसे खराब बात होती है और उसके बाद ये माना जाता है कि वी आर नॉट एजुकेटेड पर्सन। एंड द एम ऑफ दिस एजुकेशन शुड बी कि हम कुछ ऐसा करें कि हम एक दूसरे की जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस में हम एक दूसरे का साथ दें, और साथ तभी दे सकते हैं जबकि हम एक दूसरे के साथ रहने की बात करें और एक दूसरे के धर्मों का और एक धर्मों के रीति रिवाजों का हम पालन करते हैं। एंड दैट इज द सोशल एम ऑफ एजुकेशन। एंड आई होप दैट and believe in, not hope, believe in that the teacher always do such activities inside their classroom and with and interact with the number of students in the same manner. वो कभी दुर्भाव नहीं करता है, वो कभी हिंदू और मुसलमान नहीं करता है। वो टीचर उसके लिए एक स्टूडेंट होता है और वो स्टूडेंट हमेशा उसके लिए एक समान होता है। एंड दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू सल्यूट द होल teaching fraternity because they develop their students like that. Third one, the next slide is of the vocational aims of education. In this aim, we provide the education should enable a person to earn his livelihood. पूरी तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया, the focus of education is nowadays, because we are running number of professional institutions, and the role and the function or the object or the purpose of every professional institution, whether the university or the school or the institution or the colleges, is that कि हम कितने लोगों को एम्प्लॉयबल बना पाए। हम जब देखते हैं किसी बच्चे को एडमिशन के लिए वो जब हमारे पास आता है तो उसका पहला काम ये होता है, वो और उसका फादर गार्जियन कहता है कितने बच्चे प्लेस्ड होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं और कितना उनका पैकेज है। वो ये नहीं देखता कि उसकी अपनी एकेडमिक जो या क्वालिफिकेशन है वो कैसी है। Having 45% marks in intermediate and wish to get admission in B.Tech and asking कि परसेंट आपके यहाँ कितने प्लेसमेंट होते हैं, तो थिंक अबाउट। बट डेफिनेटली कि वी शुड skill that person in a way that he may able to get his bread and butter too. ये कहीं ना कहीं हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, बट it should not confine to the physiological needs only. रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित ना रह जाए. He should be able to cater the social and the luxury needs of the life too. हमें जब हम मास्लोज हियरार्की पढ़ते हैं वो तो बहुत चेंज हो गई है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें परिवर्तन की, कभी इस पे बात करेंगे, बट एटलीस्ट पर्सन शुड गेट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज होम, means roti kapda makan, that is okay, but some of the social needs should be addressed by him. तो इतना तो कमाना चाहिए कि जिससे पूरी हो जाए, एंड देन सम ऑफ द लग्जरी टू, कि मेरे पास भी कार होनी चाहिए। तो अब आज की युग में अगर वो करता है कि तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है, तो एटलीस्ट वी शुड इनपुट द स्किल्स थ्रू विच ही कैन हैव
such kind of a job through which he can earn his bread and butter too. Butter इसलिए कि butter means to cope up the needs of the social and the some of the luxury too. Next is the higher education scenario in India. Next slide is it's a very horrible condition nowadays in India regarding the higher education. Government of India has found that there are need of engineers and others technical employee in growing India after opting the part of globalization and liberalization in 90s. Suddenly, we have required number of professionals, technocraft or the managerials. Both are required because number of MNCs have come and established their own houses in India, and to cater the needs of the their technologies and the managerial responsiveness, we have required the technocrats and the managerial people at the time in huge number. जो लोग उस जमाने के पहले यदि जॉब में हो, जबकि ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन की बात हम करते थे, डॉक्टर भी नेक्स्ट प्ले कर दीजिए इसको, तो वो देखिए क्या आपने कभी उससे पहले पैकेज वर्ड सुना होगा अपनी लाइफ में? पैकेज मैंने तो नहीं सुना था बिफोर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन. इट हैज कम विद द एमएनसीज एंड द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि मेरा बच्चा 30 लाख रुपए के पैकेज में काम कर रहा है. बड़ा अच्छा लगता है सुनने में. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि नंबर ऑफ टू कोप ऑफ द नीड ऑफ द गवर्नमेंट, the many of the universities and the colleges started, and in the private sector too. बहुत लंबी कतार हो गई. The people, those who are living in Meerut, know कि how the UP Technical University behaved at that time. आपने अप्लाई किया, उन्होंने कहा ये लीजिए आपको बीटेक चला लीजिए, ये लीजिए आप जो है वो एमबीए चला लीजिए. व्हाट हैज हैपेंड देयर आफ्टर? Once there were around 800 colleges opened up by the UP Technical University and came down to 600 and so. And number of admissions in it, you will find apart from the computer sciences कि किसी में 10 हैं, किसी उसमें कि मैकेनिकल में, सिविल में 5 हैं. तो ये हालत हो गई. तो इसका मतलब है कि एजुकेशन सिनेरियो particularly in higher education is not good, and it's criticized by number of occasions by eminent personalities. Likewise, एक बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट है, कहती है कि 80% of the technocrats are not able to whom we can provide a job. उनको हम जॉब लायक ही नहीं समझते हैं. 80% कहती है इंडिया टुडे की रिपोर्ट, बिजनेस टुडे की रिपोर्ट. एंड वो कहते हैं कि द नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड लाइक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और द and the other things which are the skill for the future required to run the show, वो कहते हैं है ही नहीं कहीं. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि why should industry entertain such type of people or the such type of technocrat or the managerial people? Means they are not employable. Think about, according to them. Likewise, the Sudha Murthy, chairman of Infosys, सभी लोग इससे परिचित होंगे, वो उनका भी ये कहना है. Those graduates are having the degrees of the engineering or the others. They don't know the ABCD of anything and immediately they cannot be employed. तो इसका मतलब है कि what we are doing inside the colleges and the university, ये क्वेश्चन मार्क है हमारी एजुकेशन सिस्टम पे. एंड अकॉर्डिंगली नेक्स्ट उसमें कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किसके लिए? नॉट फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द डे, बट वी आर इनपुटिंग एवरीथिंग फॉर आवर फ्यूचर टू.
हम अपने भविष्य के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैंने कभी किसी एक कवि सम्मेलन में एक था, बच्चों ने मुझे पकड़ लाए, तो उन्होंने कहा कि सर आप भी कुछ है। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं भैया इसके बारे में, कवि क्या होता है, कवि सम्मेलन क्या होता है, कविता क्या होती है। मैंने 2 लाइनें उसमें पढ़ी थी इस एजुकेशन सिस्टम के लिए, और वो 2 लाइन थी कि हम इसकी उनकी और उनकी बात करते हैं, कभी अपनों से ना अपनी बात करते हैं, आ मिल बैठ कर देखें या मिल बैठ कर सोचें कुछ उनके बारे में, ताकि हमारा बुढ़ापा और इनकी तकदीर समझ जाए। यानी कि whatever we are inputting right now in this in the students, whatever we are skilling, so that will definitely for the day or for them will make them employable. But at last what will happen? यानी कि आज का युवक, मेरा बच्चा या आपका बच्चा या किसी का भी बच्चा आज की तारीख में यदि वो स्किल जिसको हम सिखा रहे हैं, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बीइंग ए टीचर, तो कल क्या होगा? He will become a good citizen, he will become a good sportsman, will become the employable youth. तो क्या होगा? He will grow, his family will grow, this society, he will contribute in the society, and thereafter definitely he will input uh, uh, something, contribute in the life of the country too. तो इसका मतलब it is the responsibility of teacher of the day that he should learn what should be taught and think how should be taught. And because ये आज की बात नहीं है, उनके लिए ही जरूरी नहीं है, हमारे आपके लिए भी है कि जो बच्चा आज की तारीख में आएगा, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम जिस भी ऑफिस में जाएंगे, हमारा बच्चा हमको मिलेगा और हमने उसको कुछ सिखाया होगा, कुछ बताया होगा, तो वो हमारा सम्मान करेगा। इसलिए जरूरी है कि टुडे वी शुड improve the academic scenario of the India, and especially of the higher education, though we may be able to provide a fair opportunity to the youngsters to be employed somewhere. आप शायद मेरे से एग्री करेंगे इस बात से। Now the next slide is of the education policy. अभी समय है ना मेरे पास? डॉक्टर सुरभि, अभी मेरे पास कितना समय है? डॉक्टर वत्सला, आधा घंटा है? जी सर, आधा घंटा। Okay. जी सर। Now the next is the education policy. First education policy after independence was declared by the then education minister in 1968, and that was based on the Kothari commission. और कोठारी कमीशन भी 4 साल का 1964 से 68 था। उसके बाद ये पॉलिसी आई, और पॉलिसी को जब हमने बनाया, द पॉलिसी इनिशियली बेस्ड ऑन द प्राइमरी एजुकेशन। उस समय बहुत ज्यादा इसका वो नहीं था कि हम टेक्नोक्राफ्ट बनाएंगे या मैनेजरियल पर्सनल डेवलप करेंगे। दैट वाज प्राइमरीली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन एट दैट टाइम। देन thereafter the second education policy was launched in 1986, और emphasis क्या था? On the removal of disparity and to equalize the educational opportunity to all. भी सबको शिक्षा एक समान देने की बात की थी, लेकिन क्या आज तक वो फॉलो हो पाया? Even today we are compelling number of public institutions, mainly public schools, that they should open their door for the poorest also. उनके लिए उनको कुछ सीट्स उन्होंने कहा है कि इतनी सीट पर आपको, जो बच्चे अगर आपकी फीस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पाते, यू हैव टू टेक एडमिशन ऑफ दोस। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नो। ये बहुत मुश्किल काम है, एंड ये जब तक नहीं हो पाएगा तब तक हम एक बेटर सोसाइटी के बारे में सोच नहीं सकते। द थर्ड amendment was made in the 1986 policy in 1992, and जो कि पीवी नरसिम्हा राव साहब के समय में हुई थी। नाउ आफ्टर 34 years now we have the third policy of that is known as the new education policy 2020, in which we are addressing the technology. टेक्नोक्राफ्ट की बात चल रही है, यानी कि एड टेक एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं।
and that is the policy on which we are deliberating. And throughout India, the pupil on an individual basis or at school level or the university level, everybody is discussing the education policy 2020. Next slide is of the main focus of the NEP. क्या हम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो ये देखिए मैंने कुछ चीजें करी हैं, तो यू में believe or not, the policy focus on more on holistic development rather than marks. यानी कि हम नंबर का गेम जो है अब खत्म हो गया, एंड इट इज एन स्ट्रेस टू द पीपल ऑल्सो कि हम बच्चे से कहते हैं पड़ोसी के 99% मार्क्स आए, तुम्हारे 90% आए हैं, तो अब 90% को बहुत कम समझते हैं। मैं कभी किसी से कहता हूँ कि मैंने कि जब हम पढ़ते थे हमारे 62% मार्क्स में तो टॉप कर जाता था आदमी, तो तब तो आज की तारीख में तो हम फेलियर हो गए। तो फर्स्ट थिंग विच focuses by this NEP, that is focus on the holistic development rather than the marks. And the second thing, it will definitely address the analytical and the critical learning. ये एक बहुत जरूरी पार्ट है कि हम उसको हाउ टू एनालाइज द थिंग्स प्रॉपरली, कि ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और इसके लिए हम ये इस अ फंडामेंटल इशू ऑफ द पॉलिसी कि द कंसेप्ट फॉर द इंटेलेक्ट एनालिटिकल एंड द क्रिटिकल. द नेक्स्ट इज द मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी एड्रेस वंस कि 26 हमारी दुनिया में आज की तारीख में 26 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, इनिशियली दे पुट एवरीथिंग इन देयर ओन लैंग्वेज टू द स्टूडेंट्स, सबको उनकी भाषा में बताते हैं, एंड ग्रेजुअली देन अपग्रेड द स्टूडेंट विद अदर लैंग्वेज टू इन इंग्लिश और अदरवाइज. यहां पर लेकिन हम क्या कहते हैं, डे फर्स्ट हम पब्लिक स्कूल में डालते हैं, द फोकस मस्ट बी, फोकस ऑलवेज भी कि वो इंग्लिश में पढ़े. हम उसको 1 2 3 गिनती नहीं बताते, अपनी मातृभाषा से सब परिचित नहीं कराते. हम कहते हैं बोलो 1 2 and 3. शायद मेरे ख्याल से जो चीज वो आसानी से समझ सकता था हमने उसको बहुत ही क्रिटिकल समझा. एंड ये दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी फोकस ऑन द मदर लैंग्वेज इनिशियली. जब वो समझदार हो जाएगा तब आप उसको कुछ भी करा देते हैं, करा सकते हैं उसमें. नेक्स्ट, द फोकस इज ऑन डिजिटल लिटरेसी. आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट एडटेक की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब डिजिटल लिटरेसी वी आर यूजिंग एट ऑल स्टेजेस ऑफ लर्निंग. एंड नंबर नेक्स्ट इज द फोकस इज ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स. वी कैन चूज एनीवन. जैसे अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट में भी द म्यूजिक, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं तो उसको म्यूजिक पढ़ना चाहता हूँ. देखिए डाइवर्सिफाइड हमने कर दिया पूरी एजुकेशन को, कि हम एक आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लें, एक कॉमर्स का सब्जेक्ट ले लें, और एक हम जो है साइंस का सब्जेक्ट ले लें. तो हम इस तरीके से एजुकेशन को अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसको हम कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं. एंड द फोकस इज ऑन द वोकेशनल ट्रेनिंग एंड द प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स टू. हम केवल किताबी ज्ञान नहीं पढ़ा रहे उनको, हम जो कुछ बता रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, उन सबको हम करके भी दिखा रहे हैं. और यदि किसी चीज को, यदि आप किसी चीज को बनाकर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके किसी चीज को दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से बच्चा जल्दी सीख जाता है. दैट्स व्हाई द फोकस इज ऑन द वोकेशनल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर. एंड फर्दर वी फोकस टू द फ्यूचर नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री टू, कि बाजार क्या चाहता है, क्यों आपको बच्चों को एम्प्लॉय करे, और उसके लिए बाजार चाहता है कि वो उसकी जो फ्यूचर नीड्स है, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी मस्ट पुट इन, मस्ट लर्न ऑन दैट स्टेज, कि जहां वो पढ़ रहा है उसको वो पढ़ाई जानी चाहिए. दीज आर द नोन एज द फ्यूचर स्किल्स. नाउ आई वुड लाइक टू कम टू द लास्ट focus of the NEP, on which my entire this
presentation is depend upon, that is a skill. The policy focus on the human development and enabling every student to develop to their maximum potential. यहाँ पर हम स्किल बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड टू मेक ए मैन परफेक्ट? कौन सी, किस किस तरह की स्किल्स उसमें इनपुट करें? तो ब्रॉडली we can analyze the skills in 4 different categories. Next, Dr. Surbi, next to kariye. So these are the 4 skills broadly: the conceptual skill, the technical skills, the human skill, and the social skills. ये 4 तरह की skills मैंने define की हैं, और 4 तरह की skills 4 तरह के लोगों के लिए नहीं है. कुछ स्किल ऐसी है जैसे ह्यूमन स्किल, उसी पर आऊंगा, और द फोकस इज ऑफ माय लेक्चर इज ऑन दैट ओनली. टेक्निकल स्किल्स, सबसे पहले मैं कंसेप्चुअल स्किल की बात करता हूं कि कंसेप्चुअल स्किल्स इज रिक्वायर्ड टू हुम. देखिए, एक व्यक्ति कुछ बड़ा हो जाता है, लाइक द वाइस चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रोफेसर दीपा शर्मा इज द वाइस चांसलर ऑफ द IIMT यूनिवर्सिटी. अब देखिए, कंसेप्चुअल स्किल, शी हैज टू प्लान एंड शी हैज टू प्लान and then implement it according to the need and the desire of the chancellor and the requirement of the industry or the scenario of the education. तो अब उसको किस तरह की स्किल की आवश्यकता होगी? इस तरह के लोग जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उन पॉलिसी मेकर्स को जो स्किल रिक्वायर्ड होती है, वो स्किल्स कहती हैं, इसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल स्किल, या इसको हम कहते हैं वैचारिक कौशल की बात करते हैं, कंसेप्चुअल स्किल. और कंसेप्चुअल स्किल में क्या होता है कि रिलेटेड विद द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द इंडस्ट्री और द यूनिवर्सिटी, एंड दे डिफाइन द प्लान with the help of the chancellor or with the help of the other eminent personalities. उनके लिए टेक्निकल कंसेप्चुअल की जरूरत होती है. नेक्स्ट, the technical skills. Now we need the person, those who will implement the plan and policies as laid down by the top officials, and for that we need the sum of the people those have the sufficient knowledge of the specific field. हम यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात कहते हैं. जैसे वत्सला इज द स्टूडेंट ऑफ द बायोटेक, he can taught the biotech only, and to teach the biotech we should have the person like Vatsala or like Surbi or like Navneet, कि जो उसको ये पढ़ा सकें. लेकिन मुझे आपने कह दिया कि सब आप वो पढ़ा के आइए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, मुझे क्या पता क्या होती है. इसके मतलब that's why we need the specific personality, the specific skill to taught that particular thing. इसका मतलब है यहाँ से टेक्निकल स्किल is required for those who will implement the plan and policies and laid down by the officials. और यहाँ पर टेक्निकल स्किल में हमको स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, और इसको हम कहते हैं तकनीकी कौशल. तीसरी जो सबसे मेजर स्किल है, जिसको कि ह्यूमन स्किल, और जिसके लिए मैंने सब कुछ ये लिखा पढ़ा, आज का ये जो टॉपिक था, ह्यूमन स्किल. वी हैव टू वर्क विद द पीपल. हम अकेले काम नहीं करते, हम काम करते हैं लोगों के साथ, और या हम व्यक्ति खुद काम करें या किसी ग्रुप में काम कर सकें. और ह्यूमन स्किल को कहा जाता है, ह्यूमन स्किल्स आर द एबिलिटी टू वर्क विद अदर पीपल इंडिविजुअली. यदि हमें अपने क्लास में हम काम कर रहे हैं तो हमको अकेले ही करना पड़े ना, वहां जाके अकेले ही पढ़ाना पड़ेगा. तो वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटी इंडिविजुअली. Sometime it may be a group task, so that within the groups, like the अभी मैंने देखा था टेक फेस्ट हुआ, that is a group task. Number of people were engaged over there. अलग अलग ग्रुप बने थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का था, कुछ इंस्पेक्शन का था, कुछ और तरीके के थे. इसका मतलब वी हैव टू वर्क विद द पीपल. तो हमें ये आना चाहिए कि हम इंडिविजुअली कैसे करें. अगर इंडिविजुअली इनसाइड द क्लासरूम और हमने किसी बच्चे को उठाया, उसको पकड़ के पीट दिया, क्यों भाई? कोई पूछेगा मुझे क्यों आपने ऐसा किया, तो आपको आंसर देना पड़ेगा. तो अब या आपने कुछ कह दिया किसी को, तो आपको कुछ कहना पड़ेगा. इंडिविजुअली यू हैव टू परफॉर्म
and you should have that skill through which you can perform your job honestly and sincerely, and you should have the skill through which you can be involved in a group to perform. तो ये दोनों चीजें हैं, ये ह्यूमन स्किल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ह्यूमन स्किल पर इसके बाद आऊंगा कि क्योंकि मैंने इसको लिया है। नेक्स्ट इज द सोशल स्किल। वी हैव टू वर्क फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा काम किया जाता है। बीइंग एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, a university, we are here to develop the skills of the students, those who will employable thereafter, and they will become the ambassador of the university too. वो कहेगा कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, कि मैं यहाँ IIMT से पढ़ा हूँ। और जब भी IIMT से पढ़ के कहेगा और उसके बाद उसका कहीं अच्छी जगह से प्लेसमेंट हो गया, तो always he will ask, I'm the student of the IIMT University Meerut. That's why we have to train the person like that कि he should be appreciated thereafter too. और अगर ऐसा नहीं होगा, सोसाइटी में वो पहचान हम नहीं बनवा पाएंगे अपने स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट्स आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द। हम मॉक पब्लिसिटी की बात करते हैं ऑलवेज, वी डोंट बिलीव इन द एडवर्टीजमेंट। तो वी बिलीव इन द मॉक पब्लिसिटी थ्रू द पर्संस, उनके जो वो अपने से बात करके देंगे, तो वो दैट पब्लिसिटी इज एवरलास्टिंग, हमेशा बनी रहेगी। आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। एडवर्टीजमेंट क्या है, आपने लगाया पोस्टर या बैनर और उसके बाद किसी ने 4 दिन बाद हट गया, ये फाड़ दिया, तो व्हाट विल हैपन? तो इसलिए कि वी शुड हैव एवरलास्टिंग इंप्रेशन, एंड दैट इंप्रेशन विल कम विद द हेल्प ऑफ द सोशल स्किल्स, कि हमको लोगों के लिए काम करना है। और लोग कौन है? कि वो व्यक्ति जो आज हमारा स्टूडेंट है, he will become the आइडेंटिटी या एंटिटी ऑफ द सोसाइटी। और उसको हम कैसे पढ़ाएं कि ही विल बिकम ए सिटीजन, गुड सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, ही विल बिलीव इन सिविक सोसाइटी, एंड ही मे कंट्रीब्यूट इन द लाइफ ऑफ द कंट्री टू। ये तब होगा जबकि इस सोशल स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमन स्किल। बेसिकली आई वुड लाइक टू डिपेंड ऑन इट्स ओनली नाउ टुडे। Human skill, that is the most important part of anybody's skill, या an individual too. यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में बताता है कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, कुछ बताने की जरूरत नहीं। यू पास सम टाइम विद हिम और हर, आपको खुद पता चल जाएगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सम टाइम बिकॉज ऑफ any of the pressure within or the outside, या कोई काम का भी बोझ हो सकता है, कुछ किसी ने कह दिया उसका बोझ हो सकता है, मेरी अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकती है, और तब जाके हम उसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं। हम एग्रेसिव हो जाते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। हम किसी को कुछ कहने लगते हैं, बाद में एपोलोजाइज करते हैं अपने से, खुद से, कि मैंने ऐसे क्यों कह दिया, इसको जरूरत तो थी नहीं, लेकिन कर जाते हैं। तो दिस स्किल, if you want to learn, then you should learn yourself only. अपने आप को पढ़िए, और अपने आप को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा where I stand, और मुझ में क्या कमी है या क्या होना चाहिए था। It's a non-technical skill and known as its soft skills also. किन किन चीजों को शामिल, मैंने कुछ चीजों को शामिल किया है। मैंने शामिल किया एम्पैथी को, कम्युनिकेशन की, यानी कि आप जब भी किसी बात करते हैं किसी भी चीज की, तो हम बात करते हैं इस बात से कि वो कितना सभ्य है, इंसान है, उसमें लोगों के प्रति सहानुभूति है कि नहीं है। यदि लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं है, तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फिर लोग उसका साथ क्यों दें, उसकी बात क्यों माने। इसलिए यू शुड डेवलप दिस स्किल अमंग योरसेल्फ and by yourself. Empathy. अगर किसी को आपकी आवश्यकता है, आपकी सहयोग की आवश्यकता है, you should come forward. जैसे today I visited the Vice Chancellor office today, and at the time the a small child of 5 or 6 year old was sitting over there, and she was asking something, and जैसे कि एक बच्चों के साथ कुछ खेल रहे हों,
यानी कि वी शुड हैव दैट सहानुभूति की एम्पैथी टू द पीपल, कि अगर हमारा कोई क्लास 4th एम्प्लॉय उसके बच्चे आ गए किस तरह के, तो हमको उनको एड्रेस करना चाहिए, हाँ भाई क्या कर रहे हो, पूछना चाहिए। क्योंकि एक मैंने कहीं कहा कि कई बार जो है वो तबीयत जो है वो दवा लेने से ठीक नहीं होती। कई बार तबीयत जो है सिर्फ हाल पूछने से ठीक हो जाती है। कैसी हैं आप सुरभि? तो यानी कि आप डेफिनेटली सुरभि विल गिव मी द स्माइल एंड कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो इसका मतलब है हमेशा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही पूछ लेना इतना बहुत, कैसे हैं आप, इतना बहुत होगा। और कभी कभी ये होता है कि अगर कोई चीज होती है, हमें कोई परेशानी भी होती है, एंड वी आर द फैमिली ऑफ IIMT वर्किंग टुगेदर। मैंने पहले ही कहा है वी हैव टू डेवलप द क्वालिटी एंड द स्किल ऑफ द टुगेदरनेस। तो हम क्या करते हैं कि अगर दुख है तो कह दो मुझसे, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। तो कोई अगर बात भी होती है, कोई ऐसी अनड्यू चीज जिसको नहीं होना चाहिए घट जाती है, अगर हम सब साथ हैं, इफ द क्वालिटी इज डेवलप्ड बाय आवरसेल्फ, द क्वालिटी ऑफ टुगेदरनेस, तो डेफिनेटली हम उस चीज को जो खराब थी उसको बेहतर कर सकते हैं। The communication always be positive and very soft. That's why I always ask the pupils must be sweet listeners. If you want to earn something in your life, believe me, first you should develop the quality of this sweet listener. आराम से सुनिए। कहते हैं ना कि कोई अगर बोलता नहीं तो इसका मतलब है कि वो बोलता नहीं। खामोशी बहुत कुछ भूल जाती है। इसलिए आप बहुत सारी चीजें आप ना कहें, लेकिन आपकी जो 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 आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो आप बता देती कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो यू मस्ट बी स्वीट लिसनर। द एडेप्टेबिलिटी जो मैंने पहले ही बताया कि ये आप में नहीं है, देन यू कांट बिलीव इन चेंज। एज in my first I think dialogue I have started that the Navneet, who is Navneet, the person who believe in innovation and reforms, and next one the Surabhi, who believe in the adaptability to promote these people to come forward and to motivate to adapt change. तो इसलिए adaptability is one of the thing which has to be developed. The coaching, the self awareness, which I already explained, is the creative thinking. अगर आपको कोई बोलने का मौका नहीं मिल देता तो आप चुपचाप रहिए। कोई करने का मौका नहीं देता, आराम से बैठिए, लेकिन कुछ ऐसा करते रहिए कि सामने वाला बंदा मजबूर हो जाए, नहीं 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 इसको बुलाना पड़ेगा, इसको पूछना पड़ेगा ये कैसे किया। बहुत सारे काम है करने के लिए, उनको करते रहिए। टीचर कहे मेरे पास कोई काम नहीं है तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, अरे काम नहीं तो बैठ के कोई पढ़ना लिखना शुरू कर दो, कुछ रेफरेंस बुक लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, कुछ अपना माइंड जो है थोड़ा सा उसे कुछ सेट माइंडसेट जो है थोड़ा सा देखो, और कुछ लिखना शुरू कर दो, रिसर्च पेपर, कुछ आउटकम हो जाएगा। तो मुझे ये कहते हुए टीचर्स को अच्छा नहीं लगता जब वो कहते हैं मेरे पास कोई काम नहीं है। यू हैव लॉट ऑफ वर्क नाउअडेज एंड यू शुड बिलीव यू कैन टर्न आउट द वर्ल्ड विद योर रिसर्च, या अपने अपने आप चीज़ों से उसको बदल सकते हैं। रिजिलियंस वाकई में, and understanding of the body language and trust building, these are the skills which has to be developed to put yourself, the human skill, the person who will become the acceptable to the society at large. जब तक वो नहीं होगा तब तक आप इस चीज को कर नहीं सकते हैं। And next slide is the focus on skill development. Next slide, थोड़ा जल्दी मैं खत्म कर दे रहा हूँ उसको। next हाँ, focus on skill development। जो हमारी FAP है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो हमारा टारगेट है, जो फोकस है, वो है इंस्टीट्यूशन मस्ट फोकस ऑन द स्किल डेवलपमेंट ऑफ professionals. We are talking about the professional and what kind of skills are required: the conceptual, technical, human and social. All such qualities should develop among the students. Institution must ensure the application of OBL,
यहाँ एक बड़ी परेशानी है, जब हम कभी एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो हम ही कहते हैं कि अर्ली 50s the objective of the organization was the management by principles. जो सिद्धांत थे उसके आधार पर हम मैनेजमेंट करते थे। उसके बाद आया ग्लोबलाइजेशन का एरा, उसमें हम कहा नहीं यार, वो दैट इज ऑब्सोलीट नाउ, वी हैव टू मैनेज अवर ऑर्गेनाइजेशन बाय मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। हम चीजें निर्धारित करेंगे और इस निर्धारित करने के बाद ही हम चीजों को अचीव करने की कोशिश करेंगे, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नाउ ओबीएल हैज कम। अब क्या होता है आफ्टर 2014 ऑनवर्ड्स? मोदी जी क्या कह रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं नहीं, हम इसको भी नहीं मानते, वी बिलीव इन मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स, द आउटकम बेस्ड लर्निंग शुड बी इनपुट। तो अब क्या उसका नतीजा हुआ, उस नतीजे पर हम आना चाहते हैं। इसलिए नाउ द academicians are opting the path or the education learning that is the OBL, outcome based learning। ये होनी चाहिए, इसका नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। एंड प्रोफेशनल शुड नॉट स्टॉप लर्निंग, दे शुड कीप एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। इट इज नॉट द लास्ट स्टेप ऑफ द लर्निंग। Number of people will come, number of things will come. We believe in innovation. I think I had earlier mentioned in my the deliberation, Navneet means believe in the innovation and the reforms. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा नई नई चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इट इज ऑन द लास्ट स्टेज और द स्टेप ऑफ द लर्निंग। वी हैव टू बिलीव दैट नथिंग is the last, the new will come always, and skill gives you the strength to meet the dynamic of modern world. You have to compete with the world, your fellow colleagues, those who are living in Australia and England, you have to compete with them. ये नहीं कह सकते कि सर लोगों, तो उनके पास तो अपॉर्चुनिटीज जाते हैं इसलिए हम जो है उनसे कैसे compete करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता। You have to compete with them if you want to grow, if you want to recognize yourself at global level, then definitely you have to learn things which are the things available in other part of the world, and you cannot escape कि मेरे पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो आपको करनी पड़ेगी। और जल्दी से मैं कंक्लूजन पर मेरे ख्याल से पहुंच जाऊं, बाकी और सब चीजों को द टाइम इज ओनली 5 मिनट लेफ्ट विद मी, तो मैं कंक्लूजन पर पहुंचना चाहता हूं। लास्ट वो कर रहा है एजुकेशन ग्रोथ इज, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट कंक्लूजन पर आ जाइए। यस ओके। ये 2-3 स्लाइड्स मैंने इसमें बनाई हैं कि आखिर जो कुछ हमने कहा उसका मतलब क्या है और हम क्या सोचते हैं एनईपी के बारे में। मैंने कंक्लूजन में फर्स्ट कहा है कि एवरी चेंज कैन बी फियर अनलेस इट इज अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। शुरू में मैंने पहले कहा था व्हाई पीपल अपोज एवरी न्यू थिंग। अगर मुझे 20 साल अगर ईस्ट की तरफ बैठे हुए रहा और कल कुछ ऐसा आया कि मेरा ऑफिस चेंज कर दिया और को वेस्ट की तरफ मुझे बिठा दिया, तो आई विल बी द फर्स्ट मैन हु विल अपोज इट। मैं तो नहीं बैठता ऐसे। तो विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, विदाउट नोइंग द ऑब्जेक्टिव, वी ट्राई टू अपोज इट। तो इट मींस एवरी चेंज कैन बी फियर्ड अनलेस इट इज इट्स अचीव its objective. Similarly, we can see the NAP 2020, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। सेकेंड वन, प्री इंडिपेंडेंस की बात जब हम करते हैं तो प्री इंडिपेंडेंस के बाद से और मेरे ख्याल से वर्षों तक 90s तक हम केवल एक ही पॉलिसी को ढोते रहे, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ द लॉर्ड मैकॉले। और वो क्या कहती थी कि वी हैव टू ट्राई टू इनपुट दैट क्वालिटी अमंग द स्टूडेंट, कि उनको हम एक क्लर्क बना पाए, मगअप करने की कोशिश करें। देयर वाज नो क्रिएटिविटी चैप्टर वाज देयर, कि हम उनको कुछ नया करने के लिए दें, अपने आप से कुछ करें। इस तरह की फैसिलिटीज वर नॉट अवेलेबल टिल 1990। तो हमने जिस समय शुरू किया है कि ग्लोबलाइजेशन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना, कि नंबर ऑफ
MNCs will come and establish themselves. And for those, we have to have the number of technocrats and the professionals to cater the needs of the MNCs. Then we have developed the number of institutions and the universities in private sector. And we are now inputting the number of skills required for those or as per the requirement of the industry. Next, present education policy is in seen as the new reformative version. Until today, I'm not fully satisfied with the new education policy, but definitely it's a reform in the earlier policies, and if implemented by the academician and the universities sincerely, then you will see the sea change in the academic scenario of India, and you will see the sea change in the skills which we are inputting the number of students, and they will prove themselves that they are the better on this earth from their counterparts with those who are living abroad in UK and the USA too. Next, and we are giving the chance to create something else for the innovation to the students also, but it has acquired the huge amount to implement the policies, because we are asking the टेक्नोलॉजी. एक स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें भी कहते हैं आप एनईपी लागू करिए. आप गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर कभी जाइए, आप आईआईएमटी में देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में जाइए तो आपको वहां पर कुछ नहीं मिलेगा टेक्नोक्राफ्ट के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में. दे वांट टू एस्टैब्लिश, दे वांट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, द एनईपी 2020. हाउ इज इट पॉसिबल? So it has required 6% of GDP. If you want to initially invest 6% of the GDP in education, that will find to implement the policy. Otherwise, it may not be. NEP will definitely reduce the burden, examination burden on the students. कि उनको ऐसा थोड़ा सा कम लग रहा है, because we are shifting towards the vocational training and the practical knowledge among the students, and we are providing the flexibility to the number of students to choose their subjects to, and definitely we are going to use STEM-based learning that will help the students to compete globally. These are the conclusion and my suggestions, that definitely, and I hope that you will organize the academic activities like that in your institution periodically, and help the students to come forward and to deliberate with it among the teachers too. मेरा एक ये कहना है डॉक्टर नवनीत जी से कि this opportunity should be given to the PG students too, to deliberate their views in FDP or in any of the functions or the academic activities, who can, because we are inputting that the vocational and practical training should be given to them also, and we are promoting the innovative techniques or innovative ideas of those who are the learners right now. Though still today I'm one of the learner and you are also learner, so we cannot stop learning, and it may be by the students too. So thank you very much to provide me a chance to deliberate with us, to the intellectual class of the pupil of IIMT University and the otherwise those who are the witness of the show. Thank you very much to provide me a chance. Thank you so much, Honorable PVC sir. It was a joy to hear you speak today, and it has been the first time for many of us, but some of us have been fortunate to learn from you on a day-to-day basis also. So for our participants, this was a very golden hour that you shared and spent with us. But for many of us others, we are fortunate to learn still much more from your expertise
and from your skill. Thank you so much, sir. And I also request Surbhi ma'am to please, share her closing remarks of this session. Please, ma'am. Thank you so much, sir, for delivering this beautiful lecture to us. The beauty of the lecture was that we all are aware with the facts of NEP. We all know all the points of the NEP, but the way in which you delivered your lecture today, that was so motivational. Today we came to know that what we have to do with our upcoming generations and what kind of skills we are in need to develop in all those students. Apart from this, today we three who are the organizers of this FDP also got three specific meanings of our names. Thank you so much, sir. And I cannot express my heartfelt thank to you because we all are in learning phase with you, and we all want to get many more things from your expertise. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Surbhi. Thank you, Surbhi madam. And of course, Dean sir, I also request you to share your thoughts about this wonderful session that we just had. Please, sir. Thank you, sir. Thank you very much for such a wonderful lecture. 2-3 things I remember. One is you said that टीचर का हर दिन एग्जाम होता है और सर एग्जाम में नहीं होता है जब हम लोग क्लास से निकलते हैं। जब मैं इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा, जब हम लोग क्लास से निकलते हैं तो हम खुद रियलाइज भी कर लेते हैं कि आज फेल हुए या पास हुए। हमारा सेल्फ असेसमेंट क्लास से निकलते निकलते हो जाता है और हमें खुद लग जाता है कि हमने आज कैसा किया। सो हम लोग लाइव ऑन यूट्यूब एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करते हैं और डेली सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं। तो आपने जिस तरह से सारी बातों को बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से और एक ऐसे वे से एक्सप्लेन किया कि सबको आसानी से समझ भी आ जाए और समझ आने के साथ साथ वो उसको आत्मसात करने की कोशिश भी करें। यही सब हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग जो यंग लोग हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे जो सीनियर हैं कि इस तरह की गाइडेंस हम सारे फैकल्टी मेंबर्स को मिलती रहे और टाइम टू टाइम हम लोगों का भी मार्गदर्शन होता रहे। ऐसी सर हमारी आपसे गुजारिश रहेगी और हमेशा रहेगी और बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर तो हम आपसे गाइडेंस लेते ही रहेंगे, हमेशा लेते रहेंगे। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। एंड दिस इज द आई वुड से parameter of success of our FDP that the next speaker, Professor S.P. Singh sir, has already joined and the previous session is not over. So I welcome Professor Singh sir also, but Vatsala, I think we should have 5 minutes break because the participants are sitting. लगे वीडियो का अच्छा। So please over to you, Vatsala. Thank you, sir, and a big thank you to Satish sir for sparing so much of your valuable time and spending this afternoon with us, sir, and for being ever so loving and motivational towards all of us. Thank you so much, sir. Thank you to all the participants also. We now observe a small break of 5 minutes only since अभी उन्होंने आपका बंद कर रखा है। Thank you, revered Vatsala. speaker Thank of you, the Poster Naveen stopped sir. it. Thank you, Surbhi sir, Surbhi और सभी Yeah. पार्टिसिपेंट जिन्होंने मुझे 1.5 घंटे करीब बर्दाश्त किया और कुछ पता नहीं क्या बोला नहीं था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर अभी हम 1.5 घंटा और सुन लेंगे। Sir, it was complete pleasure. It was a It joy. was wonderful. thank you very much. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Vatsala मैम Sir. 5 मिनट्स का ब्रेक लेकर दोबारा जी ज्वाइन सर, करते हैं। जी सर। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 minutes. Professor S.P. Singh sir, who is going to be the revered resource person for this session, has already joined, but since this session
has just ended. So yes, we need a break of 5 minutes for technical reasons also. And we meet precisely at 3:45 p.m. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Thank you.
हेलो 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 सुरभि मैम, डॉक्टर सुरभि सिंघल प्लीज। हेलो Sir, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मैम। मैम कब तक एकदम रखते सब लोग ज्वाइन करते हैं तो जो रिसोर्स पर्सन है आपके प्रोफेसर एस सिंह सर एक बार उनके कनेक्शन वगैरह चेक कर लेते हैं। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?